protectionism and US tariff sanction on India, critically analyze the challenges these trends pose to Indian economy. तो आर simplified version मु करते सार detail रे बुझेबे. Okay, so fiscal health index आ वे दिटा का करिवे सार, potential GDP. So 7-8-9 सार करिवे. Then आमे गोटे important question करिवा. Okay, easy question जे discuss how gender budgeting serve as an effective tool for promoting gender equality and women empowerment in India. Critically evaluates its impact on public policy formulation and resource allocation. Kuha prathame gender budgeting kono and how it is serve as an effective tool for promoting gender equality and women empowerment in India. Evaluate its impact on public policy formulation and resource allocation. Wow. So formulating budgets that promote gender equality. Okay. Now come hochi targeting a okay, reduce inequalities by inequalities male female thara female manako pai amaro besi benefit rohu nathila agoro to ebe particularly semananko equality provide kariya pai semananko bhitare semananko more priority diya jauchi amara women empowerment katha ame koche. So kon amara budget re hochi. So let's see the answer amara kon kariya. Discuss how gender budgeting serve as an effective tool for promoting tama budget re ame kemiti gender sensitized budget tiyari karuche or more priority ame dauche jemti equally the budget will address the problem of both male and female, so that will promote the gender equality and women empowerment in India. The evaluates impact on public policy formulation and resource allocation. I question तमरा already परीक्षा रे पढ़ी छे already आगुरी भी पढ़ी थला women specific schemes तमे सेंटर रो आउ स्टेट रो देखो मु जति कि जोडा का बर्निंग तुमको दोउची पढ़ाओ ममता स्कीम माने सेति कि त माने कलेक्शन तुमे देखि दबो मु एबे मॉडल आंसर तुमको देबी देखि दबो तमे जदी खोजिबो भी सेति कि पाइबो सेति गारंटी मु देबी तमे जदी खोजिबो भी एति खोजि कि बाहर करि परिबो. Okay, let's see gender budgeting रे जो LGBTQ community service है सेटा पॉइंट हम रखि परिबा कि रखि परिबो तांको भी हमरा बेनिफिट दिया अछि रखि परिबो. ओके, सो लेट्स सी तो इथरा में कोन आंसर ओ एटा यूएस तारीफ करे होला. ओके, सो ता पई मु बनै थिली बट सेडा सार करियो. Okay, so आमे देखिबा प्रथमे इंट्रोडक्शन concept objective कोन institutional framework impact on public policy और resource allocation ओडिसा रो किछि पॉइंट्स देखिबा challenges रखिबा way forward and conclusion. Okay, so now coming to प्रथमे आमे देखिबा what is gender budgeting. So प्रथमे इंट्रोडक्शन है तमे कॉन्स्टिट्यूशन लो किछि पॉइंट्स रखि परिबो और एसडीजी रो गोल तमे देखिबो गोल नंबर 5 रे हमरो जेंडर इक्वालिटी कथा कोआ जाय छै इंट्रोडक्शन ने सेटा रखि परिबो. So gender equality is both constitutional mandate आर्टिकल जो हमरे कहबा राइट टू इक्वालिटी 14 रु 18 अछि सेथिरे हमरो 14 15 16 इट्स रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी and a development imperative recognize that the budgets are not gender neutral. So gender budgeting was introduced in 2000 हमरो 5-6 बेले को हमरो इंट्रोड्यूस हला टू मेनस्ट्रीम जेंडर पर्सपेक्टिव इन फिजिकल प्लानिंग. तो हमर जल बजेट होची तो समस्त को आखिया के रखी की हमें याकू तैयारी कले बजेट को. सो मेन एम होची aim to translate policy commitment into a tangible outcome for women's empowerment, economic participation and social justice, aligning with the SDG goal number 5 जोटा कि हमें gender equality कथा कहछि. So introduction में तमे एटा लिखि परिबो. Okay,
सेकेंड आमे देखिबा concept of objective कौन हमरो. So gender budgeting means analyzing and restructuring public expenditure and revenue policy to promote gender equality. It is not separate budget for women. किंतु आमे जो budget करूचे तो सेइथिरे आमे integrate करिबा policy गुडाक so that it will be हमरो inclined towards हमरो gender equality को हमरो inclined हेतु. For so access how the government spending affect the men and women differently. Ensure adequate resource flow to women focus program. Promote accountability and transparency in achieving gender outcomes. Okay, so बुझी पहला तो आम बजेट रे एमिति किसी माने रिस्ट्रक्चर करिबा हमर पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पॉलिसी को एटा हमर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करिबा. वुमेन फोकस प्रोग्राम आमे देखिबा so that resource should flow to the women focus program and government spending टा both हमारा men और women मानन को equally हमारा जमती address करूथबो. Okay, so institutional framework जदि हमें देखिबा एटा introduced by Ministry of Finance in 2005-06 रे. Ministry of Women Child Development is the nodal agency and gender budgeting cell हमारा अछि existing 57 ministries रे अछि. Gender budgeting statement part A 100% women scheme part B रे more than 30% women benefits annexed in union budget रे हमरो रहुछि. Okay, so आमे जदि देखिबा impact on public policy and resource allocation 2024-25 रा जो जदि आमे allocated budget देखिबा allocated under gender budget around 5% of the total expenditure हमरो gender budget आड़ को जायछि. Okay, integrate women needs in education, health, infrastructure, entrepreneurship सबुथिरे आमे देखुचे जो वुमेन्स मानकर नीड को देखि कि तांकर एम्पावरमेंट को देखि कि आमे स्कीम्स रखिचे. सो देखिबा आमे केमिति हमर बजेट रे सेमाननकु बेनिफिट दबा पे हमर कोन कोन रहउचे. फॉर एग्जांपल आमे देखिबा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट केमिति करा जायछि. प्रथमे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जोथरे कि 30 लाख करोड़ लोन ऑलरेडी दिया है आ सेथिरु 70% हमर वुमेन एंटरप्रेन्योर. स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया सो बूस्ट वुमेन लेड बिजनेस और इनोवेशन. जदि पीएम आवास योजना देखिबा सेथिरे हमर 75% जो होम दिया जायछि इट इज ओन बाय वुमेन. ओके, जदि सेल्फ हेल्प ग्रुप देखिबा एसएचजी 9 करोड़ वुमेन लिंक टू द क्रेडिट तो जोटा कि हमर सेलिंग रेस टू 20 लाख. लखपति दीदी ड्रोन दीदी इनिशिएटिव जदि देखिबा प्रमोट रूरल वुमेन इनकम आउ टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन. ड्रोन दीदी हमें वुमेन मानक पई सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमें ड्रोन दउछ और से ड्रोन थ्रू रे से माने कोन करूछंती एग्रीकल्चर फील्ड रे पेस्टिसाइड स्प्रे हो और हमरो क्रॉप सर्विलेंस हो ए सब गुडा काम करूछंती और हमरो क्रॉप सीड डिस्ट्रीब्यूशन हो और ए सब गुडा काम ड्रोन थ्रू. सो बोथ हमें देखिबा रूरल वुमेन मानन को हमें इनकम रे हो और टेक्नोलॉजिकल ताको एम्पावरमेंट करूछे. महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ओवर 43 लाख अकाउंट ओपन करा जायछि एनकरेज सेविंग्स एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी. ओके, जनधन हो किंबा सुकन्या समृद्धि हो तो जोथिरे जनधन अकाउंट और सुकन्या समृद्धि रे भी हमरा कोन ओवर 4 करोड़ अकाउंट प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन सुकन्या समृद्धि कथा में कहछि. सो दीज आर द पॉइंट्स जोडा को हम कहली दीज आर फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, देन आम जो देखिबा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू कोन आमे सोशल और हेल्थ एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पोषण अभियान जो आमे कहले मिशन पोषण अभियान 2.0 टैकल द मालन्यूट्रिशन अमंग द वुमेन और चिल्ड्रन रहिले. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जोथरे हमर कंडीशनल कैश ट्रांसफर करा होछि प्रेग्नेंट वुमेन को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पई जो माने कि मेडिकल रे डिलीवरी होछि जो माने को तांको हमर पैसा दिया होछि. आई थिंक तमरो 6000 टका दिया होछि. ओडिसा रे ममता योजना जोटा कि 10000 टका तुमको दिया जाछि. आयुष्मान भारत योजना रे जो वुमेन माने जो हमें कहै हेल्थ इंश्योरेंस दिया होछि 50% वुमेन बेनिफिशियरी एंड से माने को हमर जदी ओडिसा रे हमें देखिबा आयुष्मान भारत योजना और हमरा गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे जदी हमर पैसा 5 लाख तो हमर पर फैमिली किंतु वुमेन मानक पई एक्स्ट्रा 5 लाख रहउछि ना नहीं. तो आयुष्मान भारत योजना उज्ज्वला योजना रे जो हमर दिया जायछि एलपीजी गैस कनेक्शन दिया होछि सो
10 crore LPG connection amara extra दिया to improve the health and dignity. Okay, sanitary pad खुशी scheme हो, sanitary pad scheme हो, स्वच्छ भारत रे promote hygiene, reduce the dropout rate. Okay, then जदि हमें legal आउ social reform कथा देखिवा ट्रिपल तलाक बिल जोटा 2019 रे आनी protect Muslim women's right एबे हमर कोन ना जोटा आबर्सन जो आमे कहूचे जे आगरु जदि जने वुमेन करो कंडीशन बहुत क्रिटिकल अछि आगरु हमरा आबर्सन 24 वीक्स माने हे गेले हमरा आबर्सन करी होनतला किंतु नाउ आबर्सन लिमिट एक्सटेंड टू 24 वीक्स सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट हमरा आसी जोथरे सेफगार्ड द सरोगेसी मदर मैटरनल बेनिफिट लीव जोथरे कि हमें तांकर पेड लीव को एक्सटेंड करछे 26 वीक्स नारी शक्ति अधिनियम बिल आसी 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर जो थी आमे तांको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कथा कहूचे यदि एजुकेशनल कथा हमें कहिबा एइथरे एनईपी 2020 प्रमोट जेंडर इंक्लूजन एंड फ्लेक्सिबिलिटीज समग्र शिक्षा प्रोवाइड सेपरेट टॉयलेट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हमरो ओडिसा रे तमे लिखि परिबो आ पई गोटे हमरो शक्तिश्री ओके जोटा कि हमरो आफ्टर माथ ऑफ एफएम यूनिवर्सिटी रो शक्तिश्री आप ओके शक्तिश्री आप रे कोन सबु हमर वर्तमान यूनिवर्सिटी कॉलेज रे हम सीसीटीवी कैमरा रहउची इंटरनल कंप्लेंट कमिटी रहउची शक्ति साथी शक्ति संयोजिका ऐसो माने रहउची माने कोनोसी यदि हरासमेंट केस होची यू कैन डायरेक्टली रेफर टू हमर कोन ना इंटरनल कंप्लेंट कमिटी सेति में गोटे ऐप क्रिएट कराई छै जार नाम होची शक्तिश्री एग्जांपल दे परिबो वुमेन नाउ outnumber the men in higher education 43% of the STEM students women are women जोटा कि highest in globally even if आगुरु हमरो सैनिक स्कूल रे हमर गर्ल्स मन को एडमिट करा होनथला बे एडमिट करा होची even if हमरो डिफेंस रे परमानेंट सर्विस कमिशन से मन को ऐड करा जाउची ओडिसा रे जदी देखिबो ओडिसा रिलेटेड कोन हमर हेची ओडिसा बजट 2024-25 रे जदी देखिबो अराउंड 17,990 crore माने अराउंड 18,000 crore हमर खर्च करा होची जोटा कि हमर 6% ऑफ द टोटल जो बजट रो ओके फॉर एग्जांपल की कोन इनिशिएटिव सुभद्रा योजना फॉर फाइनेंशियल हमर 10,000 दिया होची फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एंटरप्रेन्योरशिप में मिशन शक्ति ओडिसा रो फ्लैगशिप वुमेन स्कीम जो थे 80 लाख एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप हमर रही छंती नेशनल रूरल फॉर लाइवलीहुड मिशन ओके देन हमर मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना अब ममता जो थे कि मैटरनल बेनिफिट दिया होची जो थे हम कहले 10,000 टका दिया जाय एंड इथे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा होची मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओके सो एई सब गुडा मो गेला लक्ष्मी जोटा कि डायरेक्ट असिस्टेंस टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नंबर थिला सो ओडिसा's model integrate safety skills credit and social participation making it one India's best gender budgeting framework okay challenge कोन रहउची ना inconsistent gender disaggregate data रहउची limited capacity in gender budget cell रहउची weak impact assessment of the local level कोन actually होउची सेटा रहउनी need for intersectional focus rural tribal marginal women एवडा का तमे लिखि परिबो एंड वे फॉरवर्ड रे हमर ऑडिट हेबा दरकार कंडक्ट जेंडर इंपैक्ट ऑडिट एंड आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग रहबा दरकार इंटीग्रेट हमर ए जेंडर बजेटिंग इनटू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ने भी हमर इंटीग्रेट करिया दरकार प्रमोट डिजिटल डैशबोर्ड स्ट्रेंथन जेंडर डाटाबेस सिस्टम एंड फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर स्टेट एंड सिविल सोसाइटी okay so conclusion है तो मैं लिखी परिबो gender budgeting has evolved from a fiscal exercise into a transformative governance tool it has widened the women's economic social and political participation from Lakpati Didi in the village to women fighter pilot and policy maker by deepening its implementation and replicating successful state model like Odisha's Mission Shakti, India can ensure that every rupee spent in governance advance the cause of Nari Shakti se Rashtra Shakti, empowering women as a true driver of the national progress. Okay, तमे खोजी की तमे जहाँ भी करी दियो जत्ती की हमें स्कीम्स रखी चे जत्ती की हमें डाटा इतने रखी चे
जो एंगल रु लिखिचे जेमती इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन तमे चैट जीपीटी जहां भी खोजी कर दियो एतिकी तमे बनै परिबो सर इंट्रोडक्शन टिके सर ओके इंट्रोडक्शन में देखिले जे जेंडर इक्वालिटी इज बोथ ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तमे जो देखिला हमर कोन कॉन्स्टिट्यूशन में कोन अछि एंड आप हमरो एसडीजी गोल रे कोन अछि तो ताको हम रखिचे ओके तो ए जो स्लाइड गुडा के भी बनै छी स्लाइड गुडा को हम कंपाइल करके तुमको ग्रुप रे दे दे सो दैट लास्ट मिनिट रे रिवीजन करिया को तुमको इजी हो सर कंक्लूजन लिखिबा पई किछि टिप्स या फिर ट्रिक्स अछि कि सेमते नहीं तो तमे एमती देखो देखो ए जो कंक्लूजन दिया जाई छी तमे जदि देखिबो कंक्लूजन माने परफेक्टली सेटा को एड्रेस करूची हमें जो लिखुचे तेणु सेति पई प्रति क्वेश्चन एई क्वेश्चन पडिबो जेंडर बजेटिंग एटा नुहे कि फर्स्ट टाइम नुहे तुमको ऑलरेडी आगु ओपीएससी रे भी 20 मार्क रो जेंडर बजेटिंग पड़ी छी तमे कोन कंक्लूजन लिखिबो गोटे कोटेशन रु ये करी कि धर नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति कथा कहूचे तो एई बडा तमे गोटे पंच लाइन दोछ डेफिनेटली जे खाता देखुथबो दैट विल बी तांको ऊपर तो डेफिनेटली गोटे इंपैक्ट पड़िबो जे नहीं गोटे बढ़िया माने एंगल रुसी हमरा करछन सर सर ऊपर जा लिखा है समराइज करिकी कंक्लूजन में लिखला होनी हाँ लिखिले हबो किछि नै हम तो सही आमे कहि जे हम जोडा कि जो तमे जदि कंक्लूजन देखिबो तो सही थिरे आमे लखपति दीदी रु आमे कहले विलेज रु लखपति दीदी रु आमे फाइटर पायलट माने पूरा ग्राउंड लेवल रु आमे स्काई लिमिट जाय माने कोन ग्राउंड रु स्काई जाय सबुठी वुमेन माने को एम्पावर करा जाय तो ता सही एंगल रु आमे लिखिछे ना एटा तो तमे जदि देखिबो कंक्लूजन सही आमे लिखिछे जे gender budgeting has evolved from fiscal exercise to transforming governance tool. It has widened the women's economic, social, and political participation from Lakpati Didi in village to women's fighter pilot and policy maker. Like तमे कहि परिबो जे policy maker बदले तमे लिखि परिबो नारी शक्ति अधिनियम बिल और policy maker. By deepening its implementation, replicating successful state model like ओडिसा रा भी हमरा मिशन शक्ति कथा एथिरे रखिले नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति को दे परिबो ओके सर जो सपति आंसर रे जो फ्लो डायग्राम केमति कोन से विषय की कहले एटा मु बनेक सब देई छी एथिरे तमे एमिति बनै परिबो परीक्षा रे ओके तो जेमति हमें बनै छी एथिरे एमती वे फॉरवर्ड रे तमे पांचटा पॉइंट तमे बनै के दे परिबो ओके मझिरे गोटे करी के धर एथिरे पांचटा हमर रहिला तमे कोन करबो एमती रखी कि पांचटा पॉइंट तमे करि परिबो एमती चारटा पॉइंट करि परिबो ओके ये एमती गोटे करी कि तमे कोन करबो क्लाउड कलर सॉरी क्लाउड कलर तो पांचटा पॉइंट एथिरे एमती देई के एमती लिखि परिबो ओके सर जो हम लिखित बा जो हेलो हां जोटा हमें लिखित बा सेटा जो डायग्राम रे दर्शाइबा नहीं से नहीं आइदर तमे डायग्राम रे करूछ और लिखुछ लिखिले भी पॉइंट रे एमती करी के लिखो ओके आइदर डायग्राम करछ यदि तुम गोटे जगह यदि हेटा डायग्राम करछ आ लेखनी पुनी रिपीट हे जबो ना सेटा लिखिबानी सर एग्जांपल और मिस डायग्राम कर देलो नहीं एग्जांपल नहीं सेति पई कहली गोटे एग्जाम सेति पई वे फॉरवर्ड ता डायग्राम करो एटा तो जोठी हमर स्कीम्स गुडा के रहिला तो स्कीम्स गुडा करे तमे एमती तळु तळ करी के लिखो ओके एमती करी के लिखिबो रहिला तो एमती करी के लिखो तमे पॉइंट्स रे तो कि हमर रहिला तेनु सब गुडा के नहीं डायग्राम जोठी दरकार करिवो ये सब गुडा हमर रहिला ओके बुझि परलो यस सो ठीक अछि सो आउ जो क्वेश्चन गुडा के रहिला हमें डिस्कशन करिवा नेक्स्ट क्लास से डिस्कशन करिवा ओके सो आई थिंक मो सातटा क्वेश्चन ही करि छी इंडिया रो एटा सार करिवे तेनु एटा को मो डिस्कशन करनी बट आई हैव ऑलरेडी मेड इट कि एटा रे कोन लिखिवार अछि ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म आकु नै कि सार डिटेल ले करिवे बट मु गोटे ओवरव्यू तुमको दे दोछि जे कोन हमर चैलेंजेस रहउछि वर्तमान पर्टिकुलरली हमें जो देखिबा नेचर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म हमर एबे इंडिया 50% तारीफ हम ऊपर लगा जाय छी एंड तो ता पई क्वेश्चन नंबर को फर्स्ट देखे दोछि
मैं को डिटेल डिस्कशन करनी सार करेंगे सो आई विल जस्ट गिव ए ब्रीफ आइडिया इथरे हमें कौन लिखिबा ओके क्वेश्चन थिला एंड दिस इज आल्सो ए वर्षर क्वेश्चन आ एटा ए वर्षर सियोर पड़िबो काहे कि मु कहूची माने एटा तमे माइंड रे प्रिंट करिक रख ओडिसा रो मेन परीक्षा रे दिस इज द क्वेश्चन दिस आर गोइंग टू कम आउ वर्ष जाक आमे जदी देखिबा वन ऑफ द हॉट टॉपिक ए वर्षर कोन ना यूएस सैंक्शन तारिफ सैंक्शन ऑन इंडिया ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म इंडियन इकोनॉमी ऊपर कोन आर जदी गोटे क्वेश्चन कोन एथर पढिबो तम भाबुचो इकोनॉमी ऊपर त जाहाले भी तमरो 60 70 मार्क पढिबो जदी गोटे क्वेश्चन कोन पढिबो तम भाबुचो दिस इज द क्वेश्चन जोटा कि पढिबो okay the backdrop of rising global protectionism and US tariff sanction on India critically analyze the challenges this trend pose to India's economy suggest the policy measure to safeguard India's trade interest and sustain economic growth okay so mu just तुमको overview दे दोची and sir detail later discussion करिवे okay तो प्रोटेक्शनिज्म माने कोन हमें देखु जे प्रोटेक्शनिज्म माने हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेन काम हला जे फ्री फ्लो ऑफ सर्विस गुड्स एउडा रहिबो ट्रेड आम भितर स्मूथ ट्रेड आमे कहिबा बिजनेस बिटवीन द कंट्री रहिबा दरकार ट्रेड नेगोशिएशन ए सबुडा रहिबा दरकार किंतु वर्तमान सिचुएशन रे हमें देखो रिसेंटली 5 डेज बैक चाइना ऊपरे यूएस 100% टैरिफ लगेछि आन जोडा कि से कहछि जे 150% तारीफ हमर लगा जिवो जोडा कि हमर मीटिंग पर चाइना जदी तार कथा राजी हेलानी 150% हमर तारीफ लगा जिवो चाइना भी छाडीनी चाइना भी यूएस रो प्रोडक्ट ऊपर हमर कोन होची ना से बळिया तारीफ हमर बढ़ेछि यूएस इंडिया ऊपर हमर 50% तारीफ हाई करिछि ना नहीं तो एई भलिया माने गोटे ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म ट्रेड को नै कि हमर फ्री ट्रेड होउनी कंट्री कंट्री भितरे समस्त ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगौछन्ती समस्तंकर डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखुछन सो इंडिया रे जो प्रोडक्ट गुडा को वर्तमान यूएस रे बिक्री होतला जदी हमें अधिक टैक्स हमर प्रोडक्ट ऊपर बसी गला ताले कोन हबो इंडिया रे एक्सपोर्ट कमी जिवो तो डेफिनेटली इट विल हार्म द हमर जीडीपी को हार्म करिवो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हार्म करिवो जो माने एक्सपोर्ट करूथले यूएस मार्केट को से माने वर्तमान प्रॉब्लम रे फसिबे ओके एंड ऑलरेडी इट इज अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी को ऑलरेडी अफेक्ट करूछे ओके सो एटा गोटे हमर रहउची तो प्रोटेक्शनिज्म माने हमर जो तारीफ हाइक होची ऑन द फॉरेन प्रोडक्ट ऊपर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट तो सेटा को हमें कहउचे सो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड अलर्ट a number of protection measures globally has increased by over 40% since 2019 so major economy जो माने रहिले they are using trade barrier जेंती यूएस हमर वर्तमान 50% तारीफ रखउची okay local content rule हला strategic subsidy to promote domestic manufacturing तो एगुडा का हमर ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म रे से माने कोन करूछन ना तारीफ हाइक बढ़े की रखुछंती ओके तो एथिरे चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी कोन ना इंडिया जो हमें कहिबा एक्सपोर्ट करूथले यूएस को पर्टिकुलरली इंडिया रो स्टील हला एल्युमिनियम हला टेक्सटाइल हला ओ किछि केमिकल प्रोडक्ट्स हला तो तार कॉस्ट बढ़ी जिवो इंक्रीज द कॉस्ट तो जदी कॉस्ट बढ़ी गला रिड्यूस द मार्केट एक्सेस हमको यूएस गोटे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया अराउंड 80 बिलियन ट्रेड हमें करूथले 2023-24 रे तो डेफिनेटली एटा हमर कोन करबो रिड्यूस होबो तो एक्सपोर्ट ता हमर कोन होबो हैम्पर करबो जेहेतु ए प्रोडक्ट ऊपर हमर से माने रेट बढ़ाई देले टैरिफ बढ़ाई देले टैक्स बढ़ाई देले सो डेफिनेटली आउ से माने भी हमर कोन ना को जो आगु जो दोथले जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंस जीएसपी सेटा को भी विथड्रॉ करने छन तो डेफिनेटली ए जो यालियर बेनिफिट जोडा हमर थिला से माने हमको दबा पे नाराज ओके सेकंड हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन डिसरप्शन हबो तो पर्टिकुलरली इंडिया फार्म फेस हायर कंप्लायंस बैरियर इन द ग्लोबल आई थिंक सेमीकंडक्टर हो बैटरी हो सोलार मैन्युफैक्चरिंग चीज जोडा का हमें वर्तमान कोन करूथले ना बाहरु इंपोर्ट करूथले यूएस रु से गुडा को भी हमरो हायर वर्तमान हमको टेक्नोलॉजी दबा पई से माने रेडी नहंती ओके तो एई गुडा का हमर कोन होची ना प्रॉब्लम हमें फसिबा ओके रिड्यूस द एफडीआई एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर सो राइजिंग हमर ट्रेड बैरियर डेटा ऑफ द ग्लोबल फर्म फ्रॉम
locating the export oriented manufacturing in India आगु आमे कोन करथिले ना कोन सी टेक्नोलॉजी आनुथिले आ एठी तयारी करथिले बर्तमान सेगुडा हमर से माने राजी नहंती सो स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन डुअल यूज टेक्नोलॉजी also limit the collaboration in advanced sector like AI hela drones hela critical minerals जोडा का में एबे बाहर आनुथिले तापरे तारीफ लागिबा जो एगुडा को भी हमर रेस्ट्रिक्शन हे जिवो impact on MSME sector definitely जोडा में एक्सपोर्ट करूथिले दरा में कहबा एथिरे स्टील हला लेदर हला ए सब गुडा का में एक्सपोर्ट करूथिले सेगुडा को भी हमर टेक्सटाइल हला ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मेटल फेस एटा हमर डिमांड ता कंट्रैक्शन हबो रिड्यूस को हे जिवो हमर डिमांड ता जा फल रे की तो एई सेक्टर जो माने काम करूथिले से माने को जॉब भी हमर अफेक्ट करियो बहुत गुडे तमे बे देखु जॉब रे तमरा कोन होची ना ले ऑफ होची से माने को बाहर करा जाउची यदि डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन नहीं तो लोक माने ते रही कोन करियो तो से माने डेफिनेटली जॉब सेक्टर भी जोडा की लेबर इंटेंसिव सेक्टर गुडा का अफेक्ट हो सो थ्रेटनिंग द जॉब इन द लेबर इंटेंसिव सेक्टर ओके तो कोन को सेक्टर रे पड़िबो इंपैक्ट तो सिमिलरली अनसर्टेनिटी इन मल्टीलैटरल ट्रेड रेजिम WTO रो बे जो धरा आमी कहले जे ट्रेड को एग्जेम्पशन ज्वेलरी भी हमरा अफेक्ट होची तो WTO रो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम रिमेन पैरालाइज सेथरे ए जो एई भले हमरा जो डिस्प्यूट जे आम ऊपर बर्तमान तारीफ लगे लेटा तो WTO रे सुनानी हबा कथा काहे कि से माने तो WTO रो मीनिंग कोन ताले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किछि होउनी और तमे फ्रीली ट्रेड होउनी तमे इंटेंशनली रेस्ट्रिक्टेड करू ताले यूएस ऊपर से माने एक्शन नबा कथा किंतु WTO रो जो विंग ता एक्चुअली ए भलिया केस सुनानी करे सेठी कोनोसी जज ना तेणु पैरालाइज हे की पड़ुची तेणु वर्ल्ड रो जो ट्रेड सिस्टम वर्तमान पूरा डिस्टर्बेड हे की अछि जे जहा ऊपर लागिला वर्तमान हमर कोन होची हम ऊपर से माने तारीफ लगे चली छ सो वीकनिंग द इंडियाज एबिलिटी टू सिक्योर टाइमली रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो डेफिनेटली हमें एटा थिले सिना काम करूथले जाई कि हमें गुहारी करथांते एबे तो काम करूनी हम कोठी की जाई कि गुहारी करिवा जे हम ऊपर एते टैक्स लगे छ सो वीकनिंग द इंडियाज एबिलिटी टू सिक्योर टाइमली रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस escalate geo-economic tension between US, China, EU further agreement. Okay. सर आमे सेठी लिखि परिबा कि जो यूएस हमको मना करछि रशिया टू ऑयल इंपोर्ट कर माने कॉज तमे ऑयल इंपोर्ट करिया पे से तुमको जदि पचरा हो जे कोन पई कॉज कोन पई तमरो ऑयल हला गोटे हमरो कॉज ऑफ ये आउ से माने चाहछन जे सेमानठू अधिक हमरो जो ट्रेड डेफिसिट ता रहउची इंडिया और यूएस भीतर हमरो प्रॉब्लम कोन होची इंडिया यूएस वाला कहउछंती तो यूएस वाला कहउछंती जे हमरो बहुत ट्रेड डेफिसिट इंडिया और यूएस भीतर इंडिया सरप्लस रहउची अराउंड $45 बिलियन सरप्लस रहउची तो से कहउछंती आमे ता माने तमे हमठू कम किनुच अधिक बिकुच तो सेति पे हमें कोन करबा ए ट्रेड डेफिसिट टाकू बैलेंस करिया पे हमें ट्रेड हमें कोन करछु ना सेति पे हमें ट्रेड हाइक करिछु और तारीफ हाइक करिछु आ कोटे पॉइंट हला जे से माने चाहछन ट्रेड टाकू बैलेंस करिया पे और सेकंड हला जे इंडिया जो बाइंग ऑयल फ्रॉम द रशिया व्हिच इज इनडायरेक्टली फ्यूलिंग द रशिया यूक्रेन वार तो से माने कहउछन जे हम इनडायरेक्टली फंडिंग करछु सेति पे किंतु एटा तो जुक्ति जुक्त न हो यूरोपियन यूनियन हम